Hello friends, welcome to Edutalkwithsagar and my name is Sagar. I hope friends you are all fine and today's topic is respiratory system and today I'm going to discuss about the respiratory system in anatomy. So friends see this video from starting point to ending point. So let's start. So friends, you can see here this is the diagram of respiratory system and this is the organ of respiratory system, and now I'm going to discuss about the respiratory system. In first, we are going to know about what is respiration. Respiration is the act of breathing in and breathing out. When you inhale, you take in oxygen, and when you exhale, you give up carbon dioxide. This is respiration. The respiratory system, also called pulmonary system, consists of several organs like mm, nose and nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, lung, bronchi and bronchioles. You can see here this is the nasal cavity, this is the pharynx, this is larynx, and this is the trachea, this is the lung, there are two lungs, and this is the bronchi. The respiratory system is divided into two main components. First is upper respiratory tract and second is lower respiratory tract. The upper respiratory tract consists of nose and nasal cavity, pharynx, larynx. The organ of upper respiratory tract are located outside of the chest. ये जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट के बाहर ही उसका पोजीशन होता है, लोकेशन होता है, वो है nasal cavity, pharynx and larynx. ये है upper respiratory tract. And next is lower respiratory tract, the trachea, lung, bronchi and bronchioles. The lower respiratory tract are located in the चेस्ट कैविटी. ये जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी अंदर ही उसका लोकेशन होता है, वो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मीन्स नजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग एंड ब्रोंकाई. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नजल कैविटी. The nasal cavity is the main route of air entry and consists of a large irregular cavity divided into two equal passages by a spectrum. The posterior body part of the spectrum is formed by the perpendicular plate of the ethmoid bone and bomber. Anteriorly, it consists of hyaline cartilage. The function of nose and nasal cavity is to begin the process by which the air is warmed and filtered and cleaning. And next I am going to discuss about pharynx. You can see here this is the pharynx. And the pharynx is tube for 12 to 14 centimeter long that extend from the base of the skull to the level of 6 cervical vertebra. It lies behind the nose, mouth and larynx and is wider at its upper end. The pharynx is divided into three parts: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. And the function of pharynx is passes away for air and food, warming, taste, hearing, protection and speech. ये जो pharynx है उसका जो मेन पोजीशन होता है वो कहाँ से शुरू होता है. इसका जो द फेरिंग्स वो एक ट्यूब होता है 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड उसका जो पोजीशन होता है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल. हमारा जो स्कल है, स्कल का बेस से शुरू होके द लेवल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा. हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक उसका लेवल होता है, वो होता है उसका मेन पोजीशन. एंड इट्स लाइज बिहाइंड द नोज, माउथ एंड लेरिंग्स. एंड इट लाइट्स बिहाइंड द नोज, माउथ, ये जो नोज और माउथ है उसका पीछे एंड जो लेरिंग्स है उसका ऊपर, उसके वो उसका पोजीशन होता है. एंड उसका 3 पार्ट होता है, एक होता है नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स. और उसका जो मेन फंक्शन है वो पासेस अवे फॉर एयर एंड फूड, या इसकी मदद से जो एयर एंड माउथ से जो फूड है वो पासेस करता है. तो वो पासेस अवे फॉर एयर एंड फूड, warming, taste, hearing, protection and speech. And now I am going to discuss about larynx. You can see this is the larynx, means the voice box. Larynx is also called voice box. It extends from the root of the trunk and the hyoid bone to the trachea. It lies in front of the laryngopharynx
at the level of third, fourth, fifth and sixth cervical vertebra. ये जो लेरिंग्स है उसका जो मेन पोजीशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो जो लेरिंगोफेरिंग्स है उसका सामने होता है एंड द लेवल ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो 3, 4, 5 एंड 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तो उसका पोजीशन होता है. एंड उसका द मेन फंक्शन ऑफ द लेरिंग्स इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड. मीन्स ये जो लेरिंग्स है वो तो वॉइस बॉक्स है, उसका जो मेन फंक्शन है वो साउंड प्रोडक्शन करता है. द मेन फंक्शन ऑफ लेरिंग्स इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड, स्पीच, protection of the lower respiratory tract, passageway for air and warming. And now I am going to discuss about the trachea. You can see here, this is the trachea. Trachea is a continuation of the larynx and extends downward to about the level of fifth thoracic vertebra, where it divided at carina into the right and left primary bronchi. One bronchus going to each up. And the function of trachea is, the primary function of the trachea is to transport air to and from the lung. Without a trachea, a person would not be able to breathe. And other is cough, reflex, warming and filtering. ये जो ट्रेकिया है वो ये जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स की एंड पोजीशन से लेरिंग्स से वो कंटिन्यूएशन होता है ट्रेकिया एंड यहाँ पे आकर डिवाइडेड हो जाता है एंड उसका जो पोजीशन है वो फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा तक, द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा वहाँ तक उसका पोजीशन होता है. एंड उसका जो मेन फंक्शन है वो होता है कफ रिफ्लेक्स, वार्मिंग एंड फिल्टरिंग. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लंग. यू कैन सी हियर देयर आर two lung, the right lung and the left lung. There are two lungs. They are situated in the thoracic cavity. They are cone shaped and have an apex, a base, costal surface and medial surface. The right lung is divided into three lobes, superior, medial and inferior. The left lung is smaller because the heart occupied space left of the midline. It is divided into two lobes, superior and inferior. You can see here this they have two lungs and उसका जो पोजीशन होता है, जो हमारा चेस्ट कैविटी है उसका अंदर ही उसका पोजीशन होता है. एंड वो जो राइट लंग है उसका थ्री लोब्स होता है, सुपेरियर लोब्स, मिडल लोब्स एंड inferior लोब्स. और ये जो लेफ्ट लंग होता है उसका दो लोब्स होता है, एक होता है सुपेरियर लोब्स एंड inferior लोब्स. ये थोड़ा छोटा होता है क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे हार्ट का पोजीशन होता है, इसके लिए उसका जो साइज़ है वो इसके राइट लंग से उसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस देख रहा है आप लोग को वो स्पेस है हार्ट के लिए, यहाँ पे हार्ट का पोजीशन होता है इसलिए. एंड जो लंग है वो कोन शेप का होता है. एंड ये जो आप देख रहे हैं ये है डायफ्राम, जो लंग के जो नीचे होती है ये जो देख रहे हैं ये है डायफ्राम. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स. द टू प्राइमरी ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड व्हेन द ट्रेकिया डिवाइडेड. जब ट्रेकिया यहाँ से आकर डिवाइडेड दो पार्ट में डिवाइडेड होता है वो फॉर्म करता है ब्रोंकाई. मतलब जो फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा है वहाँ तक जो ट्रेकिया का पोजीशन है वहाँ से जो ट्रेकिया डिवाइडेड होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, वो होता है ब्रोंकाई. द राइट ब्रोंकाई इज शॉर्टर देन वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंकस. It is approximately 2.5 cm long. The left bronchus is about 5 cm long and it is narrower than the right. And the function of bronchi is control of air entry, cough reflex, removal of particular matter. So this is the function of bronchi. वो होता है control of air entry, जो जहाँ पे एयर एंटर होता है उसको कंट्रोल करता है, एंड कफ रिफ्लेक्स. सो फ्रेंड्स, दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. हियर आई एम जस्ट सिंपली डिस्कस्ड अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम.
सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा एंड कुछ सीखने के लिए भी हेल्पफुल है। एंड फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, और एक बात आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों में से कोई कॉमेडी वीडियो या रोस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा एक दोस्त का रोस्टिंग चैनल है, कॉमेडी चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखते रहना और मज़े लेना। थैंक यू सो मच।